पेपरेक्स 2025 का 17वां संस्करण आज द्वारका के यशोभूमि में शुरू हुआ। इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस संस्करण में 28 देशों के 675 प्रमुख प्रदर्शक शामिल हुए और 33,000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों का स्वागत किया गया, जिसने भारत के तेजी से बढ़ते कागज़ बाजार के प्रवेश द्वार के रूप में पेपरेक्स की भूमिका को मजबूत किया। यह 4 दिवसीय आयोजन इंडियन एग्रो एंड रिसाइकल्ड पेपर मिल्स एसोसिएशन के सहयोग से और वर्ल्ड पेपर फोरम के समर्थन से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक नेताओं, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तकों, निर्माताओं और नीति निर्माताओं को एकजुट करना है, ताकि टिकाऊ और प्रौद्योगिकी संचालित कागज उत्पादन के भविष्य को आकार दिया जा सके। As a business technocrat by leading Naini Paper Limited at Kashipur, Uttarakhand since 1995. The company is a leading manufacturer of writing and printing and industrial grades of paper. His illustrious contribution in paper industry has been duly recognized by numerous awards he has received. Bad times in the past, don't forget about COVID times. And we are seeing equally tough time now. So, it is up to us whether we make these tough times into good times or sit back and say these are the bad times. Somebody has said, when going gets tough, the tough get going. So we have to see how much tough are we, how much resilient are we, how much we have prepared ourselves in these so-called good times. On sustainable growth in our industry. My personal connection with India began in 1986, and since then each visit has left me profoundly inspired by the nation's unlimited energy and vibrant diversity. The daily life here is in vibrant wind of activity, from lively market brimming activity to the spirit of innovation that enters every sector. And above all, the warmth and hospitality of the people. Every time I return, I'm struck by a sense of possibility and optimism that seems unique to this remarkable country. No other global platform brings together mills, technology partners, suppliers, brand owners, and researchers at this scale. We meet at a moment of profound change, not all of decline, but of reinvention. A moment when paper, amongst the oldest circular material known to humanity, is assuming a new central role in the future of sustainable growth. Paper is in transition. This is India's glorious moment in a changing global materials economy. So in this context, a materials revolution is actually taking shape here. Industries are rethinking materials, from packaging to mobility, retail, e-commerce, and hygiene. So there are 3 global forces that are reshaping our paper consumption: decarbonization and circularity. Paper Mill of the Year Award. He has pioneered the use of agri-residues for paper production, and his vision and expertise have set new benchmark for sustainability and growth in the sector. I request Mr. Agarwal, President IARPMA, to welcome him by presenting the shawl, and I request our chief guest, Mr. Pavan Khaitan, to present the honor of the Indian paper industry to Mr. Gopala Ratnam. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Great privilege and pleasure to be here today to receive this award. And I have been in the industry for more than 50 years, and I have seen. आयोजन की ऊर्जा, गरिमा और नवाचार की भावना को मैं पूर्ण रूप से अनुभव कर पा रहा हूँ। यह मंच वैश्विक पेपर उद्योग का धड़कता हुआ केंद्र बन चुका है, जहां विचार, तकनीक, नेतृत्व और सहयोग एकजुट होते हैं। आज जब विश्व के अनेक उद्योग आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रहे हैं, भारतीय पेपर उद्योग दृढ़ता
अनुकूलन क्षमता और सतत विकास का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यह क्षेत्र केवल उत्पादन और विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्ता सुधार, नवाचार, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ऊर्जा, जल और कच्चे माल के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे प्रयास पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रेरणा स्रोत है। विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से जुड़े हुए I invite Mr. Jackson Fernandez, founder and managing director, Sutantra Equipments Private Limited, to join us on stage. As he makes his way to the stage, I request you all to welcome him with a huge round of applause. Sutantra Equipments Private Limited, founded by Mr. Jackson Fernandez in 2017, specializes in manufacturing cost-effective pulp and paper machinery using जापान में जितना यूज करते हैं 90% कलेक्ट कर लेते हैं, केवल टिश्यू उनका टॉयलेट में जाता है जो टिश्यू बचता। तो हमें एक मैसेज देने की जरूरत है कि एक हमारा चाहे सिगरेट की डिब्बी हो, चाहे पान का पोस्टर, मिठाई का डिब्बा हो, तो फाइबर कलेक्शन की जरूरत है, जो फाइबर कलेक्शन ओनली 50%। उसके अलावा हमें 1 मिलियन 10 मिलियन टन इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो देश को मैसेज देने की जरूरत है, पब्लिक को देने की जरूरत है कि फाइबर इकट्ठा करें, इंपोर्ट से बचें और गवर्नमेंट पॉलिसी। All the industry leaders are sitting here and we can't even imagine the largest gathering of industry leaders, people industry advantage. This is what it is. You all have heard about the priorities, the challenges, what the industry is facing, what we need, and of course about paperwork. So you might have heard about notes and stats. So you have heard about the stats at the moment. Officially consumption is 50 kilograms. And why this paperwork? So simple answer is if we simply have to move our per capita consumption from 50 kilograms to 60 kilograms, so industry needs 1 lakh tons of paper. So just to generate the paper, industry needs raw material, technology, machinery, and paper is the platform where we find a unified platform for industry, where people can get the machines, technology, raw material, and a place where people can industry can find the news, export, and destination. Organising some 600 plus exhibitions like this all over the world, from China all the way through to South America. Our business is growing, a bit like this industry is growing. And we, earlier this year, invested in buying Hive India, that was the previous owner of PaperX. And we bought the business because we are buying growth. This event is growing, and Informa is a London FTSE 100 PLC, and we invested in buying Hive India in order to become the new owners of PaperX. It's a very exciting opportunity for our company. We're very much interested anyway in growing our business in India. We're in 16 different sectors. We're very interested in the growth dynamics of this industry, and we really truly believe that we can bring our international resources to bear on helping this event and the industry grow in India. We have resources all over the world. We have 14,000 colleagues in 30 different countries. And now as PaperX is part of a bigger group exhibition company, Informa, we hope to be able to really support the growth of this event moving forward. So very happy to be here at our first PaperX, the 17th edition, but it's Informa's first edition. And we're very proud new owners of this wonderful exhibition. It is strong, and the third one is recovered fiber. These are the 3 raw materials. Coming one by one to each of these 3, wood is 100% grown by farmers in their agricultural fields. We are not allowed to cut a single tree from a forest. It's totally banned. 100% wood is being procured from the agricultural fields. These trees are grown by farmers. These trees are not cut. These trees are harvested. And these are eucalyptus, poplar, casuarina, so several kinds of varieties. Moreover, paper industry has worked so hard in the last 10 years to develop
new clones for these trees. And the biggest advantage of these clones are these are fast growing trees. And number two, water consumption is very, very low. Even lower than the conventional crops. So today, farmers are able to harvest their tree crops within 3.5 to 4.5 years. And this is in public domain that in the last 5 years, farmers' income has grown tremendously by planting these trees. That is number one. And today the percentage, as was told, it is around, I think the percentage with wood-based paper is close to 21-22%. And then comes agricultural residue. Again, look at wheat straw. Pramodji told that it was a big problem. This was getting burnt in the fields. Parali ki jalne ki samasya, tamam pollution hota hai. We are natural scavengers. We are consuming all the waste being generated, agricultural waste, agricultural residue, and converting that into paper. Look at the sustainability aspect. And the third one, recovered fiber. Today, the recovered fiber rate is less than 50% in India. Whereas in developed economies, it is more than 75%. So paper industry is working very, very hard, talking to various NGOs, working with NGOs, so as to increase this percentage. Industry, we are still the fastest growing industry in the world. In paper अगर देखा जाए वर्ल्ड ओवर, इंडिया की 13.5% से ग्रोथ हो रही है एनुअली पेपर इंडस्ट्री में. ऑफ कोर्स जो बताया गया, आपने सुना कि 700 से 900 इंडस्ट्रीज आज 200 इंडस्ट्रीज पेपर मिल्स बंद पड़ी हुई है बिकॉज सम पॉलिसी डिसीजंस ऑन दैट व्हिच वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट. जैसे आपने जीएसटी का इन्वर्टेड जीएसटी का सुना और जो डंपिंग हो रहा है उसका सुना. सो वी हैव टू बी मोर कॉम्पिटिटिव. इसमें थोड़ा हमको गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा. जैसे लग्जरी है मानती है गवर्नमेंट या पेपर को लग्जरी मानती है कि 18% 12%, क्योंकि उसकी चीज़ें बनती है वो 0% पे है, जो एजुकेशन पे आती है. क्या है? सो आई थिंक डेफिनेटली ये कुछ हुआ है उनसे, गवर्नमेंट से मिस हुआ है. बिकॉज आई थिंक डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री इज नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट. एज यू नो इट्स बेसिक प्रोडक्ट. पेपर इज यूज इन एवरीथिंग. सो आई एम श्योर दिस विल बी एंड दे कीप रिव्यूइंग इट. सो हमारा गुंजाइश है गवर्नमेंट से, जब भी नया रिव्यू होगा जीएसटी का, उसमें डेफिनेटली पेपर इंडस्ट्री को वो बेनिफिट दिया पास ऑन किया जाए. जैसे आज पेपर प्रोडक्ट जो 0% पे है या 5% पे है, पेपर जो ओरिजिनल जो रॉ मटेरियल है उसको 18% रख के कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज वो बड़ा लॉस है कॉस्ट स्ट्रक्चर में. और इंडियन पेपर को भी कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसका सपोर्ट होगा अगर वो जीएसटी रेट कम आ जाए तो. इंडस्ट्री में यहाँ पे नया क्या फोकस क्या है? नया यहाँ पे फोकस किस पे है बेसिक? इन द शो में डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज पे है. टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजी, जैसे इसको पेपर को कैसे मोर सस्टेनेबल बनाया जाए, मोर एफिशिएंट बनाया जाए, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, टाइमिंग कम हो और एक इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए वर्ल्ड ओवर के लिए. दैट्स द फोकस.